हेलो जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। वेलकम बैक टू अनवांटेड टॉक्स। टुडे वी आर हियर विद द VLR चीट शीट। अगर आपने डिसीजन मेकिंग की वीडियो नहीं देखी है, आई विल पिन इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मेक श्योर दैट यू फॉलो दैट वीडियो एंड आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि उस वीडियो को देखने के बाद आपका डिसीजन मेकिंग सेक्शन में आंसर डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा. And for those who have watched that video and requested for the VLR cheat sheet, well, this is where we are. So, let's get started. The first point, whenever you're going through a VALR passage, okay, now there are two circumstances. It could either be a poem or a passage. In दोनों ही scenarios में, what you are gonna understand is analyze the options. ठीक है. एंड इन सब पॉइंट्स में हम यही डिस्कस करेंगे दैट हाउ कैन यू एलिमिनेट ऑप्शंस, या फिर व्हाट विल बी द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट एज वेल एज एनालाइजिंग योर करेक्ट आंसर. तो एज आई सेड, योर फर्स्ट थिंग इज एक्सट्रीम इमोशंस आर अ बिग नो. सी, आपके जब भी पैसेजेस होते हैं देर विल बी सर्कमस्टांसेस जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस क्लोज होंगे, बट देन यू विल हैव टू सर्च फॉर दोज की वर्ड्स दैट दिस इज द ओनली थिंग, या फिर इट विल डेफिनेटली डू दिस. सो दीज आर दी ऑप्शंस दैट से कि यही होगा. तो एक्सेलराइड नेवर वॉन्ट्स यू टू गेट थ्रू दोज ऑप्शंस. तो वो ऑप्शंस मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स विल बी दी रॉन्ग वंस. ओके. Next is do not go line by line. Okay, now this particularly goes for your poems. Okay, now if a line in a poem says that it drew the lamp across, okay, this was one of the lines of the poem, and in option you see that the poet wants to say that the lamp was drawn. Well, no, आपका जो भी point mentioned है poem में that does not mean कि वही उसका meaning होगा. ठीक है. एंड स्पेसिफिकली जस्ट बिकॉज दोज आर सिमिलर वर्ड्स यूज्ड, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स डू गेट कंफ्यूज्ड इन सच सिनेरियोज, और वहीं पे यू विल गेन द चांस टू एक्सेल. ठीक है. सो 2 points what we have discussed is you will say no to extreme emotions, the compulsion of words like will, shall, definitely, no. There is no surety to these answers, इसलिए इन options को never give ahead. Another is do not go line by line. No poet wants you to see. What they want you is to strike a balance. ठीक है. Though they do not want कि जो line हमने mention की है go with that flow only. Okay. Next is understand the tone. ठीक है. This also depends upon what kind of poem it is. ठीक है. Irrespective of the length of the poem, I have seen a lot of students while solving the PYQs, आप में से कईयों ने यही किया होगा that you are क्रिएटिंग अ परसेप्शन कि अच्छा ये पोएम छोटी लग रही है, ईजी होगी शायद, ये पोएम लंबी है शायद, यू नो, इट वोंट वर्क माई वे. बट इन दिस केस वॉट यू आर सपोज टू डू इज अंडरस्टैंड द टोन इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट द लेंथ ऑफ दैट पोएम इज और चैप्टर इज. आपको ये समझना है दैट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड वॉट द पोएट इज ट्राइंग टू से. शायद 4 लाइन की ही पोएम होगी बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट. एंड इट माइट बी अ एंटायर पैसेज बट उसके वर्डिंग्स इतने आसान होंगे दैट आप वो फिगर आउट कर पाएंगे. ओके. एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इफ यू वॉन्ट टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन और नॉट. डू नॉट गो बाय द लेंथ ऑफ क्वेश्चन, गिव इट अ हेड. अ 5 second रूल विल अप्लाई हियर. ठीक है. आपने 5 सेकेंड देने किसी भी क्वेश्चन को. ट्राई टू अंडरस्टैंड, आर यू एबल टू understand it in one go. See, if you have actually solved the previous year questions, right, you will exactly know what I'm trying to say, because आपको question पढ़ते ही पता चल जाता है that either you will be able to solve it or you won't be able to solve it, and that first intuition is something that will help you in saving a lot of time. Okay, go by your instincts. If you think कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, you will be able to figure it out. Nothing better than that. But अगर आपको लग रहा है that you won't be able to, that's also fine. Okay. Next is elimination is an art. The initial 2 points that we discussed, ठीक है, these will definitely help you eliminate the points. ठीक है, irrespective of it being in a poem or an RC. And there are 5 options. ठीक है. XLRI absolutely does not think कि आपको 5 में से अचानक से कोई सही ऑप्शन क्लिक कर जाएगा and you will be able to score your points. No. That is exactly how this exam works.
5 options, the better you eliminate, the more you score. It is not about कि किसको कितना ज़्यादा पता है. It's just that कि आपको ये figure out करने आना चाहिए that what is not the option that can be an answer. ठीक है. Last and not the least, क्वेश्चन पेपर अपनी ईगो पे मत लीजिएगा. Even if it's 25 to 26 questions in VALR, 13 to 14 is a great score. Okay, it's a great score that makes you close to around 98 to 99 percentile. And if that's the scenario, you yourself understand that how great it is to not attempt questions. It is absolutely okay to leave the questions. There are several questions that are meant to make you confused. ठीक है. इसमें आपको ईगो पे नहीं लेके बैठना है दैट नहीं मैंने इतने PYQ सॉल्व किए, मैं 20-25 तो ऐसे ही सॉल्व करके आ जाऊंगा. डो नॉट गो विद दैट. ठीक है. मेक योर चॉइसेस राइट. सबसे पहली चीज़ आपने यही करनी है दैट यू विल फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर यू कंफर्टेबल विथ टू अटेम्प्ट. आई एम नॉट श्योर इफ यू वॉच दैट वीडियो बट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो दैट हाउ आर यू गोइंग टू अटेम्प्ट योर VALR सेक्शन. ठीक है. इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो प्लीज गो टू द चैनल एंड मेक श्योर यू गो थ्रू इट वंस. ठीक है. दूसरी चीज, once you are sure with what type of questions are you solving, then you will go with what are the options that are convenient. And if you want to understand exactly what options do you want to eliminate, starting के 2 points जो हमने discuss किए that are going to be a great life savior, and I'm genuinely not joking about this. This is some tricks that I have personally used and implemented, and only then I'm making this video. Okay, I barely had 9 to 10 days for my preparation and have aced that only with these tricks, and I'm absolutely confirming you from this कि ये चीज़ें workout करती हैं. It has worked out for me and it is absolutely going to work out for you also. That's it for this video, guys. Also, I had quite a few requests for QADI section also. Genuinely, I do not think there is any last minute strategy for mathematics. It's a subject that needs practice. It is not a theoretical part that will help you, like, you know, कोई भी cheat sheet उसमें आपकी help कर सकती है. I don't think so. And I genuinely do not want to waste you people time by making any unnecessary video. जो information जितनी मेरे पास थी, जितनी I could deliver you people, and all those content and tricks that I have implemented myself last year, and I was able to score around 94 to 95 percentile alone in VALR section within 9 to 10 days. आपके पास अभी भी time है. Make sure that you use these tricks in the coming PYQ questions when you practice, and yeah, it's definitely going to work out. Do not worry about that. Also, you have any doubts in the comment section, do let me know. I'll make sure and try that I answer those questions. If you have queries that you need to discuss in brief, I'll also pin down my email ID in the description box. There are no social media handles, and I genuinely do not want you to go through any social media handles, hence I have not kept mine also. That's it for this video. Till then, in the coming days, I'll also make sure to put up a strategy that will make you understand that आपको कितने questions attempt करने चाहिए, कितने सेफ होता है, what is this 8 consecutive type of questions जो आप लीव कर सकते हैं, consecutive लीव करने हैं या optional लीव करने हैं. All these D-Day strategy I'll make sure to post in the coming days by tomorrow or day after tomorrow. Till then, keep preparing. Bye-bye, take care, and thank you so much.